Um, Good evening, everyone. We are so excited to have you all on board with us for this exciting session on competitive programming. We have two very esteemed speakers with us today, so stay tuned as the session is going to be very insightful and all your queries will be answered. We'll wait for 5 minutes to let more people join and then we'll begin with the session. I think we can start now. Akshada, we can wait for 2 more minutes. Just we'll start at 7:05 sharp. Okay, right. I guess we are good to go. So, shall we begin? Aman, Parul, Akshita. Yeah. Yeah. Alright, so a very good evening, everyone. Let us begin. So, my name is Swastika, and I'm currently a second year CSC student at the KIIT University. I'm a part of operations domain in Microsoft Student Community KIIT chapter. And I am Akshita, and I'm in the second year CSC at KIIT University. And I'm a part of the tech team of Microsoft Student Community KIIT chapter. We'd like to give our audience a brief introduction about our community. So, Microsoft Student Community KIIT chapter is a technical community under the wing of Microsoft Learn Student Ambassador, showcasing and nurturing talents under the well known and esteemed name of the organization to carry forth and express its legacy. We conduct events all over campus, inspiring students to pursue knowledge in their own unique ways.
Along with this, we aspire to give the push they need through our club's work and through training in various domains that we provide. We believe in helping each other out in carving a niche and learning new things in the process. Each member here gets the opportunity to showcase their talent and focus on skill development through various projects. So, for today's session, we have taken up the topic competitive programming as it is the need of the hour from placement purposes as well as one's insight into problem solving. For the same, we have our much awaited upcoming event, CodeVibe, which is a competitive programming contest organized by MSc KIIT chapter in collaboration with Coding Ninjas, JetBrains, and Genesis Sources. We hope you're excited for the session. We have an amazing giveaway at the end of the session, and to be eligible for it, you just need to share about this session as much as you can on your social media handles and be interactive through our questions. Don't forget to tag our social media handles and stay tuned. So, let's proceed forward with the session. First and foremost, let us introduce our esteemed speakers for the evening. So, Aman Ashish is an IIT-BHU undergraduate. Currently, he is a software engineer intern at ThoughtSpot. He previously worked as an intern at Cisco. He qualified for the regionals at ICPC Amritapuri 2020. For those who don't know, ICPC, the International Collegiate Programming Contest, is an algorithmic programming contest for college students. Quite simply, it is the oldest, largest, and most prestigious programming contest in the world. He is also a technical content curator at the global coding platform HackerRank and a candidate master, that is, in top 300 out of 15,000 plus active programmers across India at Codeforces. Parul Bansal, a candidate master at Codeforces, is a final year computer science undergraduate at NIT Hamirpur. She is an active participant in contests on CodeChef, Codeforces, and other platforms. With a stellar record, she has been an ex-SDE intern at Amazon and Indeed. She has also been an ICPC 19 Gwalior regionalist. She also has great skills in building APIs in Node.js. Um, but this feels like something's missing, right? Since you both have got such an exemplary career, it would be great if you could introduce yourself to our attendees. Thanks, Okay, guys. I think That it's like, was really a nice introduction. I think you covered it all. Uh, I think it was a really nice introduction. Parul, do you want to add something? Yeah, I guess they covered all. We can just tell like today we are going to take a session on beginner's guide to competitive programming. So yeah. All right, guys. So let's kickstart the session. We'd request Aman and Parul to continue with the further proceedings. Also, everybody in the audience, feel free to drop down all your queries in the chat box. We'll be acknowledging them towards the end of the session. Okay, so Parul, Okay. can you share screen? Yeah. Okay, so Uh, basically this session will be focused from our side towards the beginners. So we are assuming that you're not a very good coding test, and even if you are, you might be having a little bit of idea. So even if you don't know anything about competitive coding, don't be worried. Like we'll just go from zero. okay, Cool. right. okay. Yeah. Is my screen visible? Yes. Yes, Parul Okay. is Okay. best. Mhm. So yeah. As Aman said, so today we will be just guiding you how you can start with competitive programming. Okay. So now, like the very obvious question is, what is competitive programming? So, competitive programming is a mind sport. You just have to walk right into it. You will learn the rules there only. As you play the game, harder and harder you play, eventually you will get better. And believe me, you don't need to know any fancy name, algorithm, or data structure to get started. So, just start with it and you will get better at it. So now it's clear. Like CP is just a logical game wherein you just have to write a computer program to solve a puzzle. Yeah, Now exactly. coming, yeah. Now coming to the next question, that why we should play this game? Why competitive programming? Yeah, sure. So So let me start with the slide. So mhm. first of all, let's see.
Uh, Parul very well explained what competitive programming is. Let's start with why competitive programming. Okay, so the first thing which comes to my mind when I think of competitive programming is the current market scenario, how the things go out in the market. तो अगर अभी तुम जनरली देखो तो जितनी भी बड़ी टेक कंपनीज है, लेट्स मूव फ्रॉम स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू फॉर अ वाइल. अगर तुम जितने भी बड़ी टेक कंपनीज को देखो, या तो तुम्हारा ऑनलाइन असेसमेंट राउंड, जो कि फर्स्ट राउंड होता है सारी कंपनीज में, देयर आर फ्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व और कुछ गिवन टाइम होता है. तो एग्जैक्टली कॉम्पिटिटिव कोडिंग प्रॉब्लम्स वहां पूछते हैं जो तुम पूरे टाइम प्रैक्टिस करोगे थ्रू आउट द कॉम्पिटिटिव कोडिंग जर्नी. प्लस जो इंटरव्यूज होते हैं वो डीएसए बेस्ड होते हैं. तो बेसिकली डीएसए इज अ स्मॉल सबसेट ऑफ कॉम्पिटिटिव कोडिंग. सो वंस यू आर गुड विद सीपी, you will be good with DSA. So like that's Uh, the basic thing. So like please add some more points. yeah, like I personally, my since my placement session is going on, I can tell you about that. Uh, I did CP, and I tell you that I don't have to prepare for the technical interviews. They look like a piece of cake to me. I just give the first round coding round, and then it just technique for technical interviews. I just do some mock interviews, and that's all. Like and yeah, I was able to crack interview that I was able to get offers from very good companies. I have internship offers from Google. So yeah, this is the main focus was like this doing competitive programming. Once you do competitive programming, these technical interviews will be just a piece of cake for you. Yes, so exactly. So अगर के लिए इंटरव्यूज से अगर हम हटके भी आए, तो the problem solving which competitive coding teaches you. So basically Parul told what competitive coding is. So basically you will be solving in competitive coding real world problems using codes. So basically you will be writing codes to solve some real world problems, and trust me, the level of problem solving which you will be learning from competitive coding will be really unmatchable. And as I can see in the chat, CPO development will come to that later. But trust me, when like you might be working on personal projects, small personal projects, but when you will be going to the industry level, there will be much bigger problems to solve. And I think that problem solving ability which competitive coding gives us, that is really helpful for development. And although we'll get to the point CPO development later. So like Parul, you can move forward. Yeah, like obviously it's also a very good brain exercise. It's similar to like solving logical puzzles or playing a game of chess. People who want to keep their mind always busy, CP will interest them a lot. My personal reason for choosing CP was this only. I like Yes. when my mind is busy. Yes, I've seen my friends going to gym like every day, and when I personally, I am not a big gym fan. So basically, I've seen my friends going to gym, and when I ask the reason, like they are like it helps to keep their body moving. So basically, is the Yeah. CP is the same thing, but for your mind. It will like Mhm. keep your mind running all the time. You can think at a very low level. You can think it of as a chess game. You will have several algorithms you will be following. Basically, it will be a very good brain exercise for you. Yeah, and you will have like side benefits also. Your typing speed will increase, and you will master your programming language. And once you master any one programming language, you don't have to worry about any other. You just have to search the syntax on it, and then you are good to go. Yes, So exactly. yeah, and And obviously it's fun. yes, it's fun, but the biggest factor which CP gives you is like, as I mentioned, it will help you clear the interviews. It will help you clear the coding rounds. Like they will all seem cakewalk to you if you are good enough in competitive coding. Yeah. So I hope like these points motivate you why you should start competitive programming. Yes, exactly. And let me add some few points. Uh-huh. So as I mentioned, like CP can help you to achieve and get a good job or internship. Okay. But directly also CP, like you can start problem solving for several जैसे तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो कोई तो होगा जो उन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता होगा. तो तुम प्रॉब्लम क्रिएटर बन सकते हो, और ट्रस्ट मी, कॉलेज टाइम में तुम प्रॉब्लम क्रिएटर बन के इतना पैसा कमा सकते हो कि तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो. तो सीपी से तो फायदे होते ही हैं, सीपी के डायरेक्टली भी बहुत फायदे हैं. तो बेसिकली इट्स अ ओवरऑल पैकेज. मतलब Hmm. बहुत अच्छा है. Yeah, and one more point, like
through this competitive programming, you can win a lot of goodies and all. Initially, I used to do competitive programming, but later on, when I started winning goodies, now so it started interest me a lot, and yeah, it helped me to gain confidence also. Actually, in my college, I was the only girl who used to do competitive programming. So whenever I was demotivated and then I participate in such contest and won some goodies, then I yeah that then it increased my confidence. So Exactly. I think like this is also one of the very good benefit for this. Yes, exactly. और डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर तुम देखो तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग टीचेस यू लाइक हाउ यू कैन टेक अ बिग प्रॉब्लम, सी व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर हेल्पिंग यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम. सो अगर मान लो तुम्हारे पास बहुत सारे टूल्स है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, तुम उनको बहुत एक बड़े प्रॉब्लम को बहुत छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके, मतलब दिमाग में समझ लो तो यू विल स्टार्ट एक्टिवेटिंग न्यूरॉन्स जो कभी पहले एक्टिव थे ही नहीं. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉट जस्ट कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एक्चुअल लाइफ में भी कोई भी एक बड़ा प्रॉब्लम होगा, यू विल जस्ट स्टार्ट एनालाइजिंग इट एंड स्टार्ट ब्रेकिंग इट डाउन टू स्मॉलर प्रॉब्लम्स. सो आई थिंक लाइक the best definition for competitive coding can be like it's one of the best thing which can teach you problem solving. Yeah, I agree. Okay, so I So think we can move to the mhm. next section. Okay, okay. Yeah. So I hope like this motivate you. So now let's learn how to play this game. Okay. So how to start CP? It's very simple. You just have to learn any one programming language, and that also just basic or intermediate level. You don't have to master it. Okay. And choose any one CP resource and start solving easiest problem there. Once you have enough confidence that you are able to solve particular level problems, then you can increase the toughness of questions, and similarly your level will increase. And this point is important, that you have to trust your CP resource. And Yes, about the resources we will discuss later in the we'll have an entire slides. section for the resources. So Yeah. which language is best, like we'll be discussing which platform is best. We'll have an entire section dedicated towards it. Yes. So Aman will tell you about the languages. The first thing which you might be facing while starting CP is language you might be using for competitive coding. So basically, if you look around on the competitive coding sites, you will generally find people using C++, Java, or Python. So basically, if I have to put some stats towards it, so basically C++ is used by more than 95% of the competitive programmers, followed by Java and followed by Python. So basically, C++ is the most used one. Also, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ब्रिंग अबाउट अ सॉल्यूशन. फिर हम सोचते हैं कि कौन सा पिक करना है. सबसे पहली बात, अगर तुमको सी प्लस प्लस जावा पाइथन पहले इनमें से कोई एक लैंग्वेज बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आई मीन कि अगर तुम कुछ सोचते हो तो यू कैन डायरेक्टली इम्प्लीमेंट इट, देन गो फॉर दैट लैंग्वेज. तुमको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, डोंट नीड टू गेट इनटू अ न्यू वन. लेकिन लेट्स कंसिडर कि तुमको बहुत इंटरमीडिएट लेवल पे आता है, बहुत बेसिक लेवल पे आता है, लेट्स से कोई लैंग्वेज नहीं आता. तो लेट्स कंसिडर तुम एक प्रॉब्लम सॉल्व करो कोड फोर्सेस पे, तुम उस प्रॉब्लम में फंसोगे, बहुत बार फंसोगे, ऐसा होगा ही. तो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप? ऑब्वियसली यू विल गो एंड लुक फॉर सॉल्यूशन व्हिच अदर पीपल हैव पुट फॉरवर्ड. तो जैसे मैंने मेंशन किया, 95% ऑफ द पीपल आर यूजिंग सी प्लस प्लस फॉर सॉल्विंग कॉम्पिटिटिव कोडिंग प्रॉब्लम्स. तो जब तुम प्रॉब्लम देखने जाओगे सॉल्यूशन दूसरे लोगों का, और वो ऐसे लैंग्वेज में होगा जिसमें तुमको आइडिया नहीं है, तो ये बहुत बड़ा एक बैरियर होता है लर्निंग के लिए. तो बेसिकली सी प्लस प्लस लैंग्वेज मोस्ट प्रेफर्ड होता है. तुमको जावा पाइथन पहले से आता है, गो फॉर इट. अगर पिक कर रहे हो एक बेसिक लैंग्वेज, गो फॉर सी प्लस प्लस. और सी प्लस प्लस एक ऐसी लैंग्वेज है, लाइक इफ यू आर गुड विद सी प्लस प्लस देन यू कैन पिक एनी लैंग्वेज इजीली. The same is not true if you're moving from Python to C++. So if you're not sure which language to pick, so directly go for C++. Or if you are already good in Java or Python, you can stick to it. Like it's not a big deal. Also, I forgot to mention one thing, that C++ is very fast. अगर तुम competitive coding करोगे, तो तुम एक चीज नोटिस करोगे, टाइम लिमिट होती है. There's a certain time limit in which your program has to pass. So C++ is the fastest language. Java C++ से 2 या 3 टाइम्स, पाइथन ऑन एवरेज 10 टाइम्स लो है.
तो अगर तुम सेम प्रोग्राम सी प्लस प्लस में लिखते हो और पाइथन में लिखते हो तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि सी प्लस प्लस पास करे और जावा फेल कर जाए, सॉरी पाइथन फेल कर जाए. So basically this is also a big reason to choose C++. So like that's the idea why you should go with C++ if you're not already aware of any particular language. So basically that's about it. Yeah. Okay, so now let's talk about the CP resources. We will share some trusted resources which we have used or must have used during our journey. So, yeah, first one So is the basically, program. yes, Yeah, go. okay. Okay, so You can first one is continue. haha. I mentioned now how to start CP. So you have to learn any programming language. Let's say you have learned basic level and you have to gain some confidence in that. So you can go to HackerRank, and on HackerRank there are some basic questions for a language. So you can solve them and you are good to go. Like you know that you can write the basic code in that language. So yeah, Yes, exactly. अगर इसका मैं एक एग्जांपल ले तो वैसे समझ लो CP is like writing a story or writing a novel. And the language you are learning here is like English or French, anything which you are picking. So HackerRank will help you to learn that language. Now to write that story, to write that novel, there will तो वो ऐसा पार्ट है जहाँ पे अभी हम आगे जाएंगे. तो बेसिकली ये लैंग्वेज वाले पार्ट के लिए जैसे पारुल ने मेंशन किया, HackerRank इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग लैंग्वेज. क्योंकि अगर तुम एक बार HackerRank पे जाते हो, यू विल हैव डेडिकेटेड सेक्शन फॉर वेरियस लैंग्वेजेस. जावा के लिए अलग सेक्शन है, सी प्लस प्लस के लिए अलग है. तो जस्ट पिक योर लैंग्वेज and get decently good at it. You can solve 30, 50 or 40 problems using a particular language, get a few stars, and then you can move forward to problem solving. Okay. yeah. Hmm. So like from problem solving point of view, me and Parul are going to like discuss what exactly we followed, what was our way. बहुत obvious बात है, सबका अपना तरीका होगा. So like we are trying to share our ways, how we started and how we got into competitive coding. So basically, uh, I've seen many questions in the chat, which is the best platform for CP. So like I'll just say one and out, Codeforces is one of the best platform for CP. But let's consider the fact that you are just a beginner. Okay, there are 5,000 plus problems on Codeforces, and it is very, very, very okay for you to get overwhelmed seeing the problems. So basically, that's where A2OJ ladders come into play. As you can see on the screen, A2OJ ladders are handpicked 100 problems of various levels. There's level A, level B, level C, and level D. So basically, at the starting, you can pick ladder A, go and solve 100 problems for it. सो बेसिकली ए टू ओजे के अपने प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स कोड फोर्सेस के हैं. लेकिन एक किसी बहुत अच्छे इंसान ने वो 100 प्रॉब्लम्स पिक किए टॉप बेस्ट अलग अलग लेवल के लिए. तो considering you are a beginner and you don't know which resource to follow, which problems to solve, so you can blindly follow A2OJ. And I know many of my friends, even myself, सबने A2OJ follow किया है, and at the moment they are very good at competitive coding. So A2OJ is a like trusted source to start with competitive coding. So like Parul, can you tell me Yeah. something? Yes, so A2OJ can be for complete beginners. Okay, so now let's say you are intermediate in programming and now you want to solve every type of question in a particular section. Let's say string, from easy to the hardest one. So you can go with this CSCS problem set. It is a site where there are questions, 10 to 20 questions for every section, for example string, dynamic programming, graph, tree, etc. Okay, so now you solve those problems and their difficulty varies from easy to the hardest one also. Okay, and so after solving those 10 questions you are confident that you can solve any question in tree. Not solve but at least think about it. And so yeah, I think I personally followed it. I got to know about it late, so I wasn't able to solve all the questions, but I feel like it's very good resource to gain confidence and as well as to master a particular topic. Yes, Parul, But like it you can open the link and show it to them directly. yeah, that's also yeah. Mhm. So see, introductory problems. Initially, they are simple ones, and then the difficulty increases. And similarly, sorting and searching, as I told you. Okay, and yeah, there is a book for this also. This code competitive programming programmer's handbook.
Okay, so in this book, like initially you will be told about STL and all. Like if you choose C++ as a language, then STL will be used very much. So initially, you will be told about STL and the good practices you can follow while writing a code. Okay, then similarly, it will tell you about different topics, and every topic is explained very good. This book is also very good, so you can read uh, a topic from this book and can solve on this CSAS problems. So I can show you how much problems I have solved. See. This is the introductory problems, and I wanted to master dynamic programming. So I solved all the questions. I wasn't able to solve this because it involved like some that So like we can go into dynamic programming later. Okay, so like Parul, can you get back to the slides? yeah, yeah. थैंक्स सो अगर तुमको देखो ये सबने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम फ्रेज तो सुन रखा होगा ना मतलब काफी ज्यादा हाइप है इसके अंदर तो बेसिकली ऐसा समझ लो तो अभी तक हम एक पाथ देख रहे हैं अभी इस पॉइंट तक यू डोंट नीड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम अभी एट दिस मतलब CACS के पहले तक टिल A to OJ लैडर A डिवीजन टू A द लिंक इन द स्लाइड हैज बीन मेंशन्ड टू द A लैडर इटसेल्फ अगर तुम स्लाइड फॉलो करते हो इट विल डायरेक्टली टेक यू टू द A लैडर so the path is like you can start with HackerRank, get comfortable, solve 30 or 40 questions, get comfortable with the language, come to A to OJ. You can solve the entire ladder without any much concept of data structures and algorithm. You'll just need basic if else, nested if, for loop, while loops, the basic implementation of languages. And then you need to pick up data structures and algorithm. At a very basic level, you can start with CSES problem set. So like you फर्स्ट ऑफ ऑल तुम सोच रहे होगे कि ये पढ़ना कहाँ से ये बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम कहाँ से पढ़ना है बेसिकली दो रिसोर्सेस हैं एक तो सबसे पहले कॉप्स POTW जैसा तुम स्लाइड पे देख पा रहे होगे पारुल कैन यू ओपन द लिंक प्लीज Yeah. तो इफ वी टॉक अबाउट कॉप्स POTW आई विल जस्ट से इट्स बेस्ट फॉर बिगिनर्स लाइक मेरे कॉलेज में पर्सनली मैंने अपने टाइम पे आई हैव लाइक फॉलोड दिस वेरी थॉरली सो इफ यू सी इसमें काफी बेसिक से टॉपिक्स दे रखे हैं हर टॉपिक के क्वेश्चंस दे रखे हैं तो एक पर्टिकुलर लेवल लेट्स से बाइनरी सर्च मतलब एक एल्गोरिदम है ग्रीडी एल्गोरिदम्स इस पॉइंट तक यू कैन फॉलो POTW by POTW basically इसमें एक रोड मैप सा बना हुआ है कि you have to follow this and after this you can move to something other so this is good for you till you are beginner like फिर तुम एक लेवल पे पहुंच जाओगे when you will be really aware कि what are the next topic which you have to learn what are the next question which you have to solve and for that like Parul can you tell about CP algorithms या सो लाइक इससे तुम्हें एक प्रॉपर रोड मैप मिल जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक तुम्हें किसके बाद पढ़ना है एंड देन CP एल्गोरिदम इज अ हब ऑफ दिस DSA एंड एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स इस पे तुम्हें मोस्टली हर एक एल्गोरिदम और हर एक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में मिलेगा सो लाइक अगर तुम्हें जैसे किसी और साइट पे समझ नहीं आ रहा या फिर कोड प्रॉपर चाहिए तो यू कैन कम हेयर एंड रीड अबाउट दैट जैसे बाइनरी सर्च ओनली इस यहाँ पे हर चीज़ है मतलब बेसिक से पर इसमें प्रॉपर बिगनर मतलब रोड मैप नहीं है बिगनर टू एडवांस नहीं है तो इसलिए बिगनर्स को ये प्रेफर नहीं होता पर ये मतलब ये तुम बेसिकली एक हब मांग सकते हो कि अगर तुम किसी टॉपिक में फंसे देन यू कैन कम हेयर एंड फाइंड रीड अबाउट दैट and roadmap के लिए this is a good resource which Aman discussed before so yeah and okay so now short contest अब मतलब जैसे हम पाथ फॉलो कर रहे थे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कोई साइट हमने चूज़ कर ली एंड देन हमने जहाँ से हम एल्गोरिदम्स और DS से पढ़ेंगे जब एक लेवल तक हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली वो वाले रिसोर्सेज हमने देख लिए देन वी कम टू दी शॉर्ट कॉन्टेस्ट हेलो yes अमन yes yes या यू आर है ना ओके
सो हमने शॉर्ट कॉन्टेस्ट जब हमें देनी है, हम मतलब रियल वर्ल्ड में compete करेंगे बाकी कॉम्पिटिटिव्स के साथ जो हमारे साथ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो उसके लिए कोड फोर्सेस एक साइट है जो मोस्ट सब प्रोग्रामर्स ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं। इस पे हम कॉन्टेस्ट दे सकते हैं। इनिशियली तुम्हें div 3 कॉन्टेस्ट ही देनी चाहिए, वो तुम जब इस साइट को विजिट करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। यहाँ पे तुम्हें कॉन्टेस्ट के बारे में पता लग सकता है कि कौन सा कॉन्टेस्ट एक्टिव है। तुम उसके लिए रजिस्टर करोगे एंड देन यू कैन गिव 2 to 3 hours का होता है जनरली। जस्ट टू ऐड, जिनको नहीं पता कॉन्टेस्ट क्या होता है, तो कॉन्टेस्ट को तुम ऐसे समझो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज लाइक अ नेट प्रैक्टिस। तुम प्रैक्टिस कर रहे हो कि किस बॉल को कैसे अप्रोच करना है। लेकिन कॉन्टेस्ट इज लाइक अ मैच, जहाँ पे बहुत तुम्हारे पास 6 प्रॉब्लम्स होंगे, 2 घंटे टाइम होगा फॉर शॉर्ट कॉन्टेस्ट, और तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे। एक दो तुम प्रॉब्लम गलत करते हो, यू विल हैव अ पेनल्टी। तुम टाइम लेते हो, यू विल गेट पेनल्टी। तो बेसिकली तुम्हारी रैंकिंग आएगी compared to the other people who are participating in the contest. तो कोड फोर्सेस का जो कॉन्टेस्ट होता है 2 घंटे 3 घंटे, इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। लाइक यही एक फैक्टर है जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग को इतना एक्साइटिंग बनाता है। यू प्रिपेयर विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग, और फिर तुम मूव करते हो कॉन्टेस्ट पे। मतलब ट्रस्ट मी, वो जो हार्ट बीट तेज होगी तुम्हारी, और वो जो थ्रिल आएगा ना कॉन्टेस्ट में, वो अनमैचेबल है। ये तुम खुद फील करोगे और जब तुम कॉन्टेस्ट दे रहे होगे। या तो ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म है एड कोडर बिगनर्स कॉन्टेस्ट। इस पे एड कोडर, इस पे तुम बिगनर्स कॉन्टेस्ट दे सकते हो, वो भी बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। वैसे क्वेश्चंस मतलब इजी। कोड फोर्सेस पे ऐसा सीन रहता है कि कोड फोर्सेस पे 0 से लेकर मास्टर तक सबको ही है। तो कोड फोर्सेस पे कॉन्टेस्ट होते हैं, कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, इजी इजी वाले होते हैं, टफ वाले होते हैं। लेकिन एड कोडर बिगिनर कॉन्टेस्ट सुन के ही समझ में आ रहा होगा, इट इज मेनली फोकस फॉर द पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग। तो इसमें काफी इजी प्रॉब्लम होंगे। कोड फोर्सेस पे पॉसिबिलिटी है दैट यू माइट गेट डीमोटिवेटेड, क्योंकि लोग बहुत अच्छे हैं सीपी में। अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो तो तुमको टाइम लगेगा वहां पहुंचने में, यू विल रीच वन डे, लेकिन अभी तुम शायद डीमोटिवेट हो सकते हो उस फैक्टर से। तो एड कोडर बिगिनर कॉन्टेस्ट बहुत अच्छा है उनके लिए, वो आर जस्ट स्टार्टिंग। काफी इजी प्रॉब्लम्स, काफी बिगिनर वहां पे रहते हैं। तो लाइक यू कैन स्टार्ट विद एड कोडर एंड देन यू कैन मूव टू कोड फोर्सेस फॉर शॉर्ट कॉन्टेस्ट। सो लाइक Parul, can you tell about long contests? या सो लॉन्ग कॉन्टेस्ट, ये कोच शेफ भी एक प्लेटफॉर्म है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए। इस पे भी हम कॉन्टेस्ट दे सकते हैं एंड इस और प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम बाकी हमें रिसोर्सेज हमारे पास बेटर हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है। तो इस पे लॉन्ग कॉन्टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसमें क्या होता है कि ये 10 days के लिए चलता है। इसमें कुछ 7 to 8 प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें भी सबसे पहले लेवल्स होते हैं। लेवल 2 लेवल्स में डिवाइडेड है, ठीक है। एक लेवल है जिसमें पर्टिकुलर रेटिंग के लोग पार्टिसिपेट करते हैं एंड दूसरा लेवल है जिसमें रेस्ट ऑफ द पीपल विद हायर रेटिंग पार्टिसिपेट। ओके, सो इसमें 10 days के लिए तुम्हें काफ़ी अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स मिलेंगी एंड देन तुम उसमें अपना मैक्सिमम एफर्ट डाल सकते हो उसको सॉल्व करने के लिए। उसमें पार्शियल मार्किंग होती है। पार्शियल मार्किंग इज लाइक you write a code for a problem, submit it, and it passes few test cases. तो उसके तुम्हें पार्शियल मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे ही तुम्हारी रैंकिंग होगी सिमिलरली। पर इससे क्या होता है, इससे माइंड का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। तुम 10 days तक मतलब कोई भी एटलीस्ट तुम एक प्रॉब्लम भी अगर 10 days में सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें पता लगेगा कि तुमने कितने एफर्ट्स किए हैं उसको सॉल्व करने के लिए। So तो basically उस वही। और Just to add, 2 to 3 hours में हम इतने अच्छे एफर्ट्स नहीं दे पाते। तो इसलिए ये एफर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, मतलब कि तुम इसमें अपना मैक्सिमम एफर्ट दे सकते हो। एंड जस्ट टू ऐड, मतलब तुम खुद ऐसे सोचो, 10 days का जो कॉन्टेस्ट होता है, 10 जैसे क्वेश्चन है हाउ टू कीप द मोटिवेशन गोइंग। तो बेसिकली देखो, एक 10 days का कॉन्टेस्ट है। तुम एक प्रॉब्लम पे आ रहे हो, वो प्रॉब्लम तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू विल गेट डिमोटिवेटेड। लेकिन 10 days कॉन्टेस्ट इज वेरी गुड फॉर बिगिनर्स, इसलिए क्योंकि यू कैन रीड द प्रॉब्लम। एक दिमाग में आइडिया लगेगा दैट यू हैव टू अप्लाई अ सर्टेन एल्गोरिथम फॉर इट, और बहुत चांसेस है तुमको एल्गोरिथम नहीं आता होगा एज अ बिगिनर। तो यू कैन जस्ट गो ऑन गूगल, read the हम्म algorithm, solve 10 problems on it, and then when you come back to the like long challenge, you can solve it inside the contest itself. तो beginners के लिए long challenge, क्योंकि algorithm contest के साथ सीखने की ability मिलती है, जो कि short contest में नहीं है। Short contest basically if you know you can solve it, otherwise you'll have to upsolve it after the contest. Long challenge में you can solve it inside the contest itself. So like Parul, can you tell about upsolving?
Yeah, upsolving. So upsolving, basically you participate in a contest, okay, and the contest is over. Now you have to try the let's say there were X amounts, five problems, and you were able to solve two problems. So the third problem, which you were not able to solve, you have to solve that problem after the contest end. So why you have to solve it? Because you must know, like, in contest what you lacked, that you were not able to solve that problem. So when you upsolve it, you get to know like what was missing. So when you give contest next time, you will not do the same mistake again. So this is how upsolving helps, and upsolving is basically solving the problems which you were not able to solve during the contest. And it's recommended that you solve just at least one problem which you were not able to solve during the contest. True. So basically, सबने ये सुना होगा companies के लिए you need DSA. So like through the entire discussion, we never touch upon the point of DSA. So let me make it clear. If you are good at CP, you are already very good at DSA. Okay, you have just crossed that phase of DSA if you are good in CP. बट स्टिल देखो क्या होता है जब टेक कंपनीज के इंटरव्यूज होते हैं तो देयर इज अ सेट ऑफ क्वेश्चन जो रिपीट हो सकते हैं जो रिपीट होते हैं और देयर इज अ पैटर्न व्हिच इज बीइंग फॉलोड बाय अ सर्टेन कंपनी तो बिफोर यू इंटरव्यूज लाइक तुमने कोडिंग राउंड क्लियर कर लिया अब तुम्हारे इंटरव्यूज आने वाले हैं लेट्स से यू हैव अ मंथ फॉर इट तो तुम लीड कोड स्टार्ट कर सकते हो बिफोर लेट्स से 2 मंथ्स बिफोर द इंटरव्यू सो लीड कोड क्या हेल्प करेगा लीड कोड में प्रॉपर डीएसए प्रॉब्लम्स होते हैं देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन डीएसए एंड कॉम्पिटिटिव कोडिंग so let me make it like clear what is the exact difference. So basically DSA is just a set of data structure and algorithm which will help to you to solve a direct problem. In DSA, like for example, you will be given two and you will be asked to return the sum. I'm making it very simpler for you. So DSA में तुम क्या करोगे तुम sum return कर दोगे लेकिन competitive coding is like तुमको एक problem दे रखा होगा तुम उस पे सोचोगे हाउ कैन इट बी सॉल्व्ड एंड देन यू विल कम अप टू अ कंक्लूजन कि शायद इन दो नंबर्स को ऐड करने पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड डीएसए इफ यू आर गुड एट सीपी यू आर गुड एट डीएसए स्टिल एक पैटर्न कंपनीज का होता है उसको फॉलो करने के लिए यू आर रिकमेंडेड टू सॉल्व लीड कोड 1 or 2 months before your interviews. So like this is the whole package of CP and DSA from an interview or let's say placement point of view. So Parul, would you Yeah. like to add something? Yeah, like I think you explained lead code well. So, and I think we have covered all the resources about CSCS problem. This book I have told you before. तो बेसिकली Rest. क्या है ये बहुत ओवरवेलमिंग लगा होगा तो बेसिक इन शॉर्ट अगर समराइज करें तो स्टार्ट विद HackerRank, learn the language, move to A to OJ ladders, you can solve div to a ladder, then you can start with obscure topics like basic maths, number theory, you can read from there and then you can move to CSES problem set. If you are stuck in a like you want to start searching and sorting in CSES problem set, you can find the related articles in CP algorithm. Once you feel you're good with like basic problem solving, you can start with Add Code a Beginner contest. You can start with long challenge, and you can eventually start with Codeforces small contest too. और जब कंपनीज आए जब इंटरव्यू हो तो लीड कोड कर लेना तो बेसिकली ये कंप्लीट पैकेज एक रोड मैप अगर कहो तो सीपी और डीएसए को लेकर है. Yeah, and for beginner, like प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, एंड देन कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग उस पे रिसोर्स पे ट्रस्ट करके बस क्वेश्चंस करो. सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन के रिकमेंडेड होते हैं. बेसिकली तो जहां तक ये Easier. question- हाँ हमने एक क्वेश्चन देखा था पारुल कि कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए तो व्हाट Mm-hmm. आई वुड इज शुरू करने Yeah. के लिए स्टार्टिंग यू कैन फॉलो HackerRank, Codeforces, CodeChef, बट फॉर कॉन्टेस्ट आल्सो यू कैन फॉलो ऑल द प्लेटफॉर्म जहां पे जितने कॉन्टेस्ट हो रहे हैं आंखें बंद करके कॉन्टेस्ट दो बट इफ यू टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रैक्टिस एज आई मेंशनड द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ कॉम्पिटिटिव कोडिंग stick to a platform stick to a Aman, your voice is breaking. Okay, is it clear now? Yeah. Okay. Where was I? Okay. Where was I? Can you please tell me? Problem solving. This you were telling about the programming language and understanding algorithms. Okay, I think I forgot where I was. So like you can continue with this. I guess like this slide resources we have told, so we can move to the next slide.
Sure. or you want to add anything? No, just a small thing which I forgot about the language part. Hmm. जैसे मैंने बताया था पाइथन, तो बहुत सारी कंपनीज होती हैं विच आई ऑलरेडी फेस्ड कि वो पाइथन अलाउ नहीं करती हैं क्योंकि पाइथन में बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं. तो यू मस्ट हैव लाइक हर्ड दैट पाइथन इज गुड फॉर डेवलपमेंट, यू कैन डू मशीन लर्निंग इन पाइथन. तो वो शॉर्टकट्स वहां पे काम आते हैं. तो बेसिकली देयर आर फ्यू कंपनीज, आई वुड नॉट से मेनी, देयर आर फ्यू कंपनीज हु डू नॉट अलाउ पाइथन इन द कोडिंग टेस्ट. So it's better like to stick with C++ or Java, preferably C++. So like that's about it. We can move to the next section if there's no doubt regarding this one. Okay. I'm not able to see the chat section. Can you tell me, like, if they have any doubts? We can solve No, them. I don't. Okay. So yeah. Okay. So now coming to the next big question, which every fresher have in their mind, like we should do CP or development. Okay, According to that's me, yeah. According to me, you are free to do anything. You can do anything you want at any time. But I strongly feel that like you should do development first and sorry CP first and then move to development. Okay, because in development you see results very quickly, so students are attracted towards it. But eventually, in both, you learn solving problem solving only. Okay, so while by doing CP, you develop a problem solving mind, and then if you move to development, it really helps in understanding code and logic. So I due to these reasons I feel that you should start CP first and then move to development. But let's say you want to do development first, so you are free to do development first. But when you start CP, okay, at that time, if you are late, you will find a lot of competitors near you in your college only. So just think that you were not good at it because you have not started. So play alone for some time and then compete with them in a healthier way. But obviously, if you choose a right path for CP, then you will be able to like you will be able to achieve a decent level at in about 4 to 5 months. okay. So basically, Yeah. if I have to add why CP before development, I would say like let's say you're building a small project, there you might not be needing a big problem solving ability. Okay, so let's go to an industry point of view. So I have I have a billions and rows of data with me. I have to like perform some, let's say, operations on it. So I need a most optimal way. It's a very big problem. I have to break into sub problems. और फिर मेरे को क्या करना है कि उसको ऑप्टिमाइज करना, बहुत ऑप्टिमाइजेशन चाहिए उसमें, वरना बहुत टाइम लगेगा. So basically, this is where CP helps you. CP helps you in developing problem solving ability, which will indirectly help you in development. Let's say it will directly help you in developing applications. And also the implementation part. Suppose you are thinking of something which you want to develop, and CP will help you to like develop problem solving skills, which like you can directly implement whatever you are thinking. There would be no barrier between like your mind and you writing code. You will think something and you will be just able to deliver it through code. So that is one of the best advantages which I think CP provides. Yeah, I agree. So I guess like it's up to you which path you follow, but like according to me as well as Aman, we feel that you should start CP first and then move to development because it helps you develop problem solving mind, which helps in development also. As I can see a question, so I would just take a minute to answer Uh-huh. this. The question is, can you give some insights about complexity and constraints, like the number of iteration and tricks to optimize? Like this is a very nice question. तो बेसिकली क्या होगा जब तुम शुरू कर रहे होगे कॉम्पिटिटिव कोडिंग, जैसे मैंने div टू ए लैडर के बारे में बोला, तो तुम बहुत गंदा ब्रूट फोर्स लिख रहे होगे, बट इट विल स्टिल पास क्योंकि प्रॉब्लम्स ईजियर हैं. तो अगर इटरेशन के बारे में बात करें तो लेट्स गो अ बिट टेक्निकल. सो बेसिकली नॉर्मल साइट्स पे लाइक से कोड फोर्सेस पर सेकंड यू कैन डू 10 to the power of 8 iterations. Okay, Hmm. so In one let's say second. I have a problem with you, and
आई एम गोइंग अ बिट टेक्निकल, तो अगर जिनको समझ नहीं आ रहा, नथिंग टू वरी, तुम ये बाद में देखो। लेट्स से यू कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम इन n स्क्वायर, जहाँ पे n की वैल्यू 10 टू द पावर ऑफ 5 है। तो ऑब्वियसली 10 टू द पावर ऑफ 8 इटरेशन अगर एक सेकंड में होते हैं, तो 10 टू द पावर ऑफ 10 इटरेशन नहीं हो पाएंगे एक सेकंड में। इनफैक्ट उसमें सालों लगेंगे, 1000 साल लग जाएंगे उस इटरेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो दिस इज वेयर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम कम इनटू प्ले। तुम n स्क्वायर में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, एंड देन योर फ्रेंड कम्स और वो बोलता है कि यार आई डिड इट n log n यूजिंग बाइनरी सर्च। So this binary search is a tool which is helping you to optimize n square to n log n. वरना ब्रूट फोर्स देखो, तुम्हारा कंप्यूटर है तुम्हारे सामने, इट कैन चेक एवरी पॉसिबल सिचुएशन, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो रहा ही नहीं फिर। तो दिस इज वेयर कॉम्पिटिटिव कोडिंग कम्स इनटू प्ले। एक एन स्क्वायर के अप्रोच को हाउ यू आर ऑप्टिमाइजिंग इट टू एन लॉग एन, दिस इज one of the most important thing which competitive coding teaches you. This is what data structure and algorithm is. You can follow algorithm and optimize your solution. तो simple trick यही बोलेंगे ऑप्टिमाइजेशन का कि learn to use algorithm, कहाँ पे कैसे use करना है, and that you will learn by practice. So Parul, would you like to add something over this one? या लाइक जो इटरेशंस वाला क्वेश्चन है उसमें ये जो मैंने बुक बताई थी CSCS प्रॉब्लम सेट, इसमें सब मेंशन्ड है कि 1 सेकंड में हम कितने इटरेशंस कर सकते हैं, कौन सा हमारा सॉल्यूशन पास करेगा। क्योंकि जब इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आई आल्सो फेस द सेम प्रॉब्लम। So there was one of my friend who told me about this, but you if you are also facing this problem, so Aman told you, but if you didn't understand or you want to go through again, so you can use this book. So True. yeah. So again, there's a question, which is the best platform. I would say stick to Codeforces. You'll find Yeah. like problems of every pattern over there. If you like religiously do Codeforces, I think that will be enough. Like you can cover everything with Codeforces, that is sure. Like that is the personal experience I feel about it. Okay, so we can Yeah. move to the next slide, I guess. Okay. So now like we had the this practical knowledge, this theoretical knowledge. So now let's do some question and have some practical thing. Hello. Yes, yes, yes. Aman? Yeah. Uh, So you can shall open we it. move on to questions? Sure. I think Question. like we can give an overview. It will be Haha. like it has already been 48 minutes. So I think we can give an overview of the problem. We don't like need to wait for them to solve. Otherwise, it will take a very long time. So let's open the Okay. Okay. problem, explain it, and Mhm. then we'll just show them how you can submit your solution and how you can basically write the code and think over it. Yeah, I Okay. think Okay. that would Cool. be perfect. Okay. So So this I is, will tell you about the problem. Mhm. go on. Okay. So basically, we are given any integer number, any number n. Okay. So we have to tell whether we can split it into two parts, and the two parts should be even. So The like problem basically, is. Parul, let me add something. So if you see, this is a typical competitive coding problem. You are given a problem statement. There's a story, and you are asked to solve something which will help the story. So basically, there's a real life problem. If you want to think of it as that, there's a real life problem. You have a constraint like w is less than equal to 100. You read the problem, you try to think how you can solve it, you write a code for it, and then you solve a real world problem using competitive coding. So like now, Parul, now you can explain what the problem is. So I'm not telling you the story because I also haven't read it, but I know the question. Question is like you are given an integer n, and you have to tell whether you can split it into two parts, and both the parts should be even. So if you are able to do this, you have to print yes. Otherwise, you have to print no. Parul, let's wait for like 30 seconds. Let's wait for a minute. So Parul like made the question clear. You are given an integer w, and you need to divide w into two parts such that both the parts need to be even. Okay. So you guys take a minute and write the solution chat box if anyone can think of it. Just the approach, like w should be this, w should be that, and we'll forget the coding part as of now. So take a minute. You have an integer w, divide into two parts such that both of them should be equal. You have to tell whether it is possible.
for a W to be split into two parts such that both the parts are even. So take your time and start with it. We'll just wait for 30 seconds. The link to the question is provided in the chat box, so you can go through it from there. Also, Think guys, over the hurry up. problem. We just have 1 minute for that. Yes. It's a very, it is the actually, it is one of the easiest problem. We just have another 30 seconds. If you're able to come up with a solution, well and fine. Otherwise, we'll discuss it. Okay, no solution. Like this is a really easy one. Yeah. Just have it. Well, you can move on with the solution. I think they might have developed at least an idea of the problem. There is no solution in the chat or any No, questions. not at the moment. Okay. Okay. So yeah. You want to explain or I? Okay, I think I can explain. Mhm. So let's say you are getting the W and you have to divide it into two parts such that both the parts need to be even. So, okay, so we have an answer, Aditya Pandey, W modulo 2 should be 0, which means that the number should be even. Okay, Mhm. so you would just write a code for the solution and you would submit it. So like this is the tricky part of competitive coding. So Aditya Pandey, let's say you submit the solution and you are waiting for the verdict. So let's take a case where W is 2. Okay, so 2 more to 0. You would say yes, but can you really split 2 into two parts such that both of them are even? I don't think it is possible. So like this is the corner case. So basically the solution is what Aditya said. W modulo 2 should be equal to 0, means the number should be equal to 0. Even it should be even, but the number should be greater than 2. So like for 10, we can divide it into 4 and 6. So this is the solution. After like you come up with a solution for this problem, you just write a simple code. You go to the submit section. Parul, can you show the submit section for this one? Yes. So this is So the submit section. One is like you can copy paste your code, and the other one is here where you can choose a file and exactly. submit. So you come up with a solution, you think of all the corner cases concerned with the problem, you write a code and you submit it. Like this is one of the best, like this is one of the elementary steps of starting with Yeah. competitive coding. Here you Yes, can Bhav, write the code and can submit. that's a correct solution. So basically you'll have to write the code for it. And yes, you got it accepted. Yeah. I can submit it, but like time is less. So or shall I? You can skip it, you can skip it. There's no Okay. need. They can do it for themselves. Richa saying wrong on test case 11. Richa, can you tell which test case are you failing on? We'll take that into consideration later. So, Parul, like, let's move to the next slide. Yeah. Next slide. Doubt session. Just a second. Mayank, do we ensure W is greater than 2? Yes, we'll have to, Mayank, because if we just check if the number is even, I think for text W is equal to 2, this will fail. So you'll have to check if W is greater than 2. And if it is greater than 2 and even, there, that is the condition where you will be able to say yes. That's a solution. So like we are open to problems. Okay, so first question which I can see is what should be the practice for Codeforces 1700 plus rated problems? Okay, so basically, let me tell you, if you are solving 1700 rated problem at Codeforces, you are already very good at competitive coding. Mhm. That is for sure. And basically, strategy for solving 1700 plus problem is like keep on solving 1700. Like this is a really good advice for the people for any difficulty. Let's say there's a difficulty X which you're not able to solve. So give contest. Okay. After giving a contest, you'll get a particular rating associated with your profile. Let's say you are a rating equal to 1500. So you do not need to jump to directly 1900 and solve problems. Take a step by step. Go to 1700 first. 1700 के प्रॉब्लम्स पे जाओ. अगर तुम 1500 पे हो तो ट्रस्ट मी, अगर तुम दिमाग लगाते हो तो तुम 1700 सॉल्व कर सकते हो.
तो कीप ऑन सॉल्विंग 1700, एक टाइम आएगा एंड इसके साथ साथ कॉन्टेस्ट भी देते रहो, देयर विल बी अ टाइम जहां तुम्हारी रेटिंग 1600 हो जाएगी। तो बस सेम स्ट्रैटेजी, 1600 को 1800 कर दो एंड कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। तो बेसिकली यही है। अगर बहुत स्ट्रक फील कर रहे हो, बस एक स्टेप नीचे हो, प्रैक्टिस करो, दो स्टेप ऊपर चले जाओ। सो लाइक दिस इज हाउ यू ग्रो। Parul, would you like to add something on this one? Yeah, this only like when your rating is X, just have some threshold and increase X plus some amount and solve those problems when you get comfortable with that and then move on. That's perfect. So the other question is it okay to start with, Bhaskar is asking, is it okay to start with competitive coding in your sixth semester? Like this is the thing me and Parul were discussing right Yeah. before the session. So basically, it's never too late to start competitive coding, but you'll miss on opportunities. Let's say, if you remember, in the YCP section, we mentioned that you can start with problem solving. So you will not be able to get into problem solving if you're starting competitive coding in your sixth semester. Let's say for me personally, I started my first semester. Second, let's say I started my second semester. एक साल मैंने सीपी खुद से की, एक साल फिर खुद को डेवलप किया एंड दैट वाज द पॉइंट कि तुम प्रॉब्लम कर पाओगे। प्रॉब्लम सेट करने के लिए यू ऑलरेडी नीड टू बी गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होगी। इफ यू आर स्टार्टिंग इन योर सिक्स्थ सेमेस्टर यू विल मिस ऑन द इंटर्नशिप, फिर तुमको पीपीओ नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है, तुम यू कैन स्टिल सेट फॉर योर प्लेसमेंट्स, यू कैन डू रियली गुड, लेकिन द अर्लियर you start the more opportunities you will be having. Yeah, I agree. And there is one contest also like ACM, ICPC, and others one to which we went, and that also you can they only allow students who are in college, so you will miss those also because in 1 year I it's very tough to clear the round. Exactly. And ACM ICPC को तुम समझो कि कोडिंग का ओलंपिक सही है। Mm. तो बस वही है, जितने लेट तुम शुरू करते हो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज उतनी कम होंगी, तुम जितना गेन कर पाओगे सीपी से वो उतना कम होगा। स्टिल यू कैन गेन, लेकिन वो थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा। तो ये क्लासिक प्रॉब्लम आ गया, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग 2+ hours टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बट यू फेल। तो देखो मेन चीज क्या है, व्हेन यू शुड नो दैट यू आर गोइंग टू गिव अप। दो चीजें गलत हैं, लाइक यू कैन नॉट जस्ट गो इनटू द सॉल्यूशन 10 minutes आफ्टर रीडिंग द प्रॉब्लम, एंड ऑल्सो you should not be looking up the solution 2 days after getting into the problem. Let's say we are focusing if you are a beginner. तो क्या होता है, तुम्हारे पास एक बिगिनर को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं पता होता। तो अगर तुम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो, तुम नहीं कर पा रहे हो, दिस मीन्स कि तुमको वो पैटर्न नहीं पता है। कॉम्पिटिटिव कोडिंग बहुत ज्यादा पैटर्न स्पेसिफिक है। यू विल गेट अ क्वेश्चन, तुम्हारे दिमाग में क्लिक करेगा इफ यू आर गुड एट इट कि ये पैटर्न का क्वेश्चन मैंने कब सॉल्व किया है। तो बेसिकली हाँ, तो ये पैटर्न क्लिक करेगा, ये मैंने कब सॉल्व किया है। तो हाँ, तो तरीका देखो क्या होता है। लेट्स से यू आर अ बिगिनर, तुम एक प्रॉब्लम पे पहुंच रहे हो, ठीक है। तुम 1 घंटे सॉल्व करो, मैक्स 2 घंटे सॉल्व करो। अगर फिर भी तुम नहीं कर पा रहे हो सॉल्व, दैट सिंपली मीन्स कि तुमको वो एल्गोरिदम नहीं आता, यू डू नॉट नो द पैटर्न। तो तुम उस पर 2 दिन लगा दो, 2 साल लगा दो, कुछ फायदा नहीं होने वाला। तुम सॉल्व कर लोगे लेकिन इट इज नॉट वर्थ द टाइम। सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग विल बी 2 hours के बाद तुम ट्यूटोरियल देखो, why you are not able to solve, read the editorial, understand the algorithm, cp algorithms पे जाओ, now you know which algorithm you are looking for, algorithm पढ़ो और algorithm specific problems कर लो। So like this is the way. Parul, Yeah. हाँ please हाँ। add something. इस लाइक तुम कोई भी प्रॉब्लम ले रहे हो, ठीक है, तुम उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करोगे कि सबसे पहले तुमने उसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, एंड देन लेट्स से यू वर नॉट एबल टू ऑप्टिमाइज इट फर्दर, ठीक है। तो जहाँ तक तुमने सॉल्यूशन सोच लिया है, अगर तुमने ब्रूट फोर्स तक सोच लिया है तो तुम उतना इम्प्लीमेंट करो और सबमिट करो, ठीक है। उसके बाद तुम देखो कि जो वो कोड तुमने लिखा है क्या वहाँ पे कोई ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम पॉसिबल है, या फिर तुम कुछ सोच सकते हो ऑप्टिमाइज करने का, ठीक है। तो उस पर अपना पूरा थॉट दो, एज्यूमिंग मतलब एज्यूमिंग कि 2+ जो 2 hours तुमने उस पर लगाए हैं वो पूरा टाइम तुमने उसको अच्छे से सोचा है इन अ राइट डायरेक्शन। तो अगर उसके बाद भी तुमसे नहीं होता, देन लाइक एज अमन सेड, you are missing some algorithm or some concept, so read the tutorial, uh, then you will able to analyze what was missing because you have tried your best before, and then
There are very good CP resources we have talked about, so you can choose anyone and can read about it. So next That, time when you get that problem, you will not be Yeah. stuck. that Right. was really I nice. think that was a good explanation. That I think it explained it really well. So I think we Yeah, had some it other was questions as well. a very session. It was really insightful and it was very knowledgeable. We had some pre-prepared questions that we got from the participants of our event from through Discord and Telegram servers. So we'd like to ask that as well. The first question was that we got is there an appropriate time to start doing CP? Like, is there a specific semester, a specific year when you start doing CP? देखो Uh, ये क्वेश्चन वेरी हाँ Parul, would you like to like start? yeah, like Aman just answered it now only. There, like you can start CP anytime. But as early you start, it's more better because you will have the opportunity to avail a lot of opportunities around you. Like you can go to ACM ICPC, you will be well prepared for your interviews. You can crack internships and can get a PPO from it. So like the later you start, less opportunities will you get. But yeah, Exactly. the very good advantage of competitive programming is problem solving, so that you will be able to achieve anytime. Yeah. So, True. Right. Okay, so just a second, guys. I can see a very good problem in the chat, so I would like to just pick it for now. mhm. So, how Yeah, much sure. CF rating is safe to crack coding test according to you? Like, this is a really nice question. It used to come to my mind also. So, basically, देखो, अगर मैं अच्छे से explain करूँ तो मैंने देखा है कि 19 rating वाले लोग भी एक अच्छी कंपनी क्रैक करते हैं, लेकिन मैंने सेम देखा है कि 1400 रेटिंग वाले भी लोग अच्छी कंपनी क्रैक करते हैं। तो मेरे सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो इट्स मतलब मैंने वो बहुत एफर्ट डालते हैं लेकिन उनकी रेटिंग नहीं बढ़ती है। तो तुम ये समझो, अगर तुम एक्चुअली एफर्ट मार रहे हो, फिर भी तुम्हारी रेटिंग ऊपर नहीं जा रही है, इसका सिंपली यही मतलब है कि तुम उस 2 घंटे में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ सीख नहीं पा रहे। तो बेसिकली मैं ये रीज़न है कि कम रेटिंग वाले लोग भी अच्छी कंपनी निकालते हैं क्योंकि उन्होंने काम किया होता है, बस उनकी रेटिंग नहीं बढ़ती। तो इंटरव्यूज़ में उनको थोड़ा-सा हिंट मिलता है या फिर वो वन ऑन वन अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो इंटरव्यू का सिनेरियो विल बी अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव कोडिंग सिनेरियो। कोई एक टेस्ट केस पे तुमको जज नहीं करने वाला। सो कीप ऑन वर्किंग। अगर रेटिंग नहीं भी बढ़ रही है, वन डे इट विल, तब तक कीप ऑन वर्किंग। सो लाइक दैट्स द आंसर। Yeah, that was really informative. Also, we had some other questions. So, on an average, how much time does one need to spend while doing CP? Like every day or something? in my college, I used to solve around 4 to 5 problems per day. Basically, I just focused on like I should approach the problem in a way that I'm thinking like from the basic brute force code to keep optimizing it. So it helped me increase my thinking skill. So whenever later I took any problem, then I was able to think about it in a proper way. Later on, it doesn't matter whether I reach the solution or not, but I was able to think about it. So Exactly. this is, yeah. Like this Aman, question do you is want very to add on? similar to the question like कि कोई दोस्त आकर पूछ रहा है कितने घंटे जिम जाना चाहिए। देखो, इट्स बेसिकली जितना तुम हँसते-हँसते कर लो, जितने में तुमको मज़ा आ रहा है करो, क्योंकि देखो sprint नहीं है, इट्स अ मैराथन। ऐसा नहीं होगा तुम खुद को फोर्स करके 1 हफ्ते बहुत काम कर ले रहे हो और तुम कुछ अच्छा अचीव कर लोगे। इट्स अ मैराथन। रोज़ तुम जितना हैपीली कर सकते हो करते जाओ एंड इट विल बिल्ड अप टू गिव अ बिग रिजल्ट। तो इट्स अप टू यू। इट्स अ रियली लाइक पर्सनल आंसर। Right. Thank you, Vaya, for the answer. Global declaration of arrays, good code or bad code? I can see a question in chat. Yeah, there's a question in the chat box. Global declaration of arrays, good code or bad code? If any one of you would like to take it up. जनरली इफ यू टॉक अबाउट द कोडिंग स्टैंडर्ड्स, अगर तुम डेवलपमेंट किसी कंपनी में कर रहे हो, प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, इट्स अ रियली बैड प्रैक्टिस ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ एरे।
अगर तुम इंटरव्यू में जाके ग्लोबली डिक्लेयर करते हो यार तो बहुत नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा। लेकिन आई वुड से कॉम्पिटिटिव कोडिंग जब तक तुम कर रहे हो तो वो बहुत में एफर्ट नहीं लगने वाला टू स्विच फ्रॉम अ ग्लोबल वेरिएबल टू अ लोकल वेरिएबल। तो जब तक तुम कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे हो तो इंक्रीज योर स्पीड, यू कैन गो विथ ग्लोबल डिक्लेरेशन। लेकिन इंटरव्यूज में डेवलपमेंट जहां तुम प्रोफेशनली कर रहे हो, यू विल हैव टू गो विथ लोकल वेरिएबल्स। सो सिंपल आंसर। All right. The next question that we had is how to maintain consistency while problem solving. Like people get discouraged, able to solve specific problems. So how should they cope up with this? या कंसिस्टेंसी एक इसका रीज़न है, एक इसका मतलब अब सबसे पहले कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? The question was, Parul, that how to maintain consistency while problem solving. Like people often get discouraged when they are हाँ unable हाँ to solve a specific problem or they get stuck somewhere. So how should they cope up with this? या ओके। सो बेसिकली तुम इसका एक सबसे अच्छा वो है कि तुम फ्रेंड्स में करो, फ्रेंड्स ग्रुप में करो, क्योंकि इट्स वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि तुम डिमोटिवेट सब एक टाइम पे डिमोटिवेट हो। सो उससे तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी। तुम प्रोग्रामिंग क्लब्स ज्वाइन कर सकते हो अपने कॉलेज में, प्रोग्रामिंग क्लब्स इनिशिएट कर सकते हो अगर नहीं है, ठीक है। और तुम्हें रीज़न ढूंढना है कि तुम डिस्करेज क्यों हो रहे हो। अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उससे डिस्करेज होने की बजाय तुम ये सोचो कि क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा। सो उसका तुम एडिटोरियल रीड करो एंड वही उसका रीज़न फाइंड आउट करो कि तुम कहाँ लैग कर रहे हो, एंड देन लाइक इन फ्यूचर यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। सो इतना कोई टफ नहीं होता क्वेश्चन सॉल्व करना, बस इट्स जस्ट कि यू हैव द लॉजिकल माइंड एंड Right. दैट यू कैन डेवलप easily. Aman, would you like to add something to it? No, it's clear. What Parul said is perfectly fine. Okay, right. So the next question, how did CP and the problem solving skills help you guys in the industrial sector? And what was the ultimate goal of competitive programming? What is it? Okay, let me start with it. Hmm. फर्स्ट ऑफ ऑल यू वोंट बी एबल टू रीच एट द अल्टीमेट गोल अगर तुम उसके पास भी नहीं पहुंच पा रहे हो। बाय दिस आई मीन कि अगर तुम इंटरव्यूज भी नहीं क्रैक कर पा रहे हो तो देयर इज नो अल्टीमेट गोल। ठीक है, तो लेट्स से यू हैव क्लियर्ड इंटरव्यू, तुमने सीपी कर रखी थी एंड नाउ यू वांट टू सी वेयर सीपी विल बी हेल्पिंग यू। तो जैसे मैंने मेंशन किया था कि द प्लेस वेयर आई एम इंटर्निंग एट द मोमेंट, प्योर डेवलपमेंट वर्क, लेकिन वहां पे बिलियंस ऑफ रोज ऑफ डेटा है। तो यू जस्ट कैन नॉट यूज अ लाइक ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम perform any operation on the data. You'll have to use a very optimal solution. So आई वोंट से तुम डायरेक्टली बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट कर रहे होगे, लेकिन द प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक बड़े प्रॉब्लम को हाउ यू ब्रेक इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स, हाउ यू रीड द कोड, हाउ यू गो थ्रू द कोड, हाउ यू implement things which are coming to your mind, this these are the small things which CP teaches you. Ultimate goal would be like you learn how to solve a problem. I know I'm repeating it a lot, problem solving the keyword, but CP really helps you in getting like this good. So I would say Yeah. that's the ultimate goal. All right. We have a question in the chat box that I found a little interesting. If you would like to take it up. uh, Okay, I would say no. CP is not necessary. CP, there are several other ways to like see how problem solving can be done. You can learn problem solving on the streets. Like if you're going to establish your own company, you want to crack MBA. CP is a problem solving way which will help you to the tech companies. Like it will teach what software development is in the long run. But if your goals are not aligned with software development, then I don't think you should invest time in CP or even say data structures and algorithm. That's really not necessary for you. You can just stick to development if you want to like start your own company. If you want to crack MBA, then possibly I'm not the best person to answer, but yeah, CP and DSA is not really necessary for it. Parul, would you like to add Uh, something? yeah, like according to me, actually I like to keep my mind busy, as I said. Uh, so like there are some kind of people who like this thing. So for them, like doing CP, if you don't want a tech job, still you can do CP, according to me, because as I said, it grows your mind. So growth of mind is needed in any field.
like in home also when we are doing some problem. So let's say we take this cooking only, okay. So cooking also, like different people do in a different way. सो कई कई होते हैं जिनको बहुत सफाई से करना पसंद है कि भाई हाँ हम पहले ये करेंगे देन ये करेंगे एंड देन हम फाइनली ये कर देंगे, इतने टाइम में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पहले वो रोड मैप बना लेते हैं एक माइंड में, फ्लो बना लेते हैं कि उनको कैसे करना है। और एक होता है कि जस्ट वो लग जाते हैं एंड देन मेसी सा हो जाता है। तो वही कि हम अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो वही है कि मतलब जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड डेवलप करना है वो सीपी कर सकता है। Okay, this explains it really well. So, the last question that was, what is your advice for the juniors who are starting out their journeys in the field of CP? Any other thing that you एडवाइस would like to add? यही है कि अगर हमारा सेशन मतलब हमारे सेशन से कुछ मोटिवेट हुए हो तो सीपी स्टार्ट करो, क्वेश्चंस करो एंड देन या मतलब I'm अगर sure they are motivated by the session. सो हाँ स्टार्ट करो सीपी और उसके बाद वही, एंड एक्सप्लोर इट्स करो, ऑलवेज ये योर भी काफ़ी अच्छी है। जर्नी, इट्स ऑलवेज योर जर्नी। जरूरत नहीं है तुमको किसी को किसी से कंपेयर करने के लिए। हो सकता है वो इंसान तुमसे अच्छा है, वो लाइफ में बहुत 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 अच्छा करने वाला है, तुम उसको देखकर डीमोटिवेट होगे तो तुम एटलीस्ट उससे अच्छा है, तुम जितना कर सकते हो करो वेर यू कैन। तो सीपी में दूसरे से जलना बहुत बहुत कॉमन है, नाम ही है कॉम्पिटिटिव। तुम स्टैंडिंग्स देख के चलोगे कि यार इसका अच्छा गया, तो दिस इज नॉट द वे, तुम ऐसा करोगे। लेकिन इट्स योर जर्नी, यू हैव टू लाइक क्रिएट द पाथ फॉर योरसेल्फ। तो ये ध्यान दो कि तुम अब खुद के 6 महीने से अच्छी कोडिंग कर रहे हो, तुम खुद के 6 महीने से अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो या नहीं हो, बाकी जो दूसरे कर रहे हो उनको करने दो। फोकस ऑन योरसेल्फ। या और इसको करने का कोई लॉस नहीं है, ये हर फील्ड में तुम्हें काम आएगी अकॉर्डिंग या। Alright, अच्छा guys. सिंह So का I guess क्वेश्चन है। that was all. We don't see any more questions. Aman, Parul, if you like any question in the chat box you would like to answer, you can. Otherwise, towards the लाइक end of the session. आई कैन सी अ फन क्वेश्चन, सिस्को में पीपीओ कैसे लगवाए भैया? चलिए रुका, वी कैन लाइक डिस्कस इट आफ्टर द सेशन। और नहीं देखो, आई थिंक इट इज ऑल। एक छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इज इट अ गुड प्रैक्टिस टू सी वीडियो एडिटोरियल? लाइक सी व्हेन यू आर स्टार्टिंग, वीडियो एडिटोरियल कैन बी अ रियली गुड वे, क्योंकि तुमको स्टार्टिंग में सब कुछ चाहिए होता है। तो वीडियो एडिटोरियल तुमको हर कुछ सिखाएगा, लेकिन लेट्स से कि ये एक रिटन एडिटोरियल से अच्छा क्यों नहीं इन द लॉन्ग रन। सबसे पहली बात कि you'll have to watch the entire video editorial। अच्छा, मान लो एक टाइम के बाद तुम पर्टिकुलर टॉपिक में अच्छे हो, किसी में नहीं हो, तुमको पूरा आधे घंटे का एडिटोरियल देखना पड़ेगा। लेकिन अगर एक रिटन एडिटोरियल है, यू कैन जस्ट स्किप द पार्ट्स व्हिच यू आर गुड एट, और तुम अपने सॉल्यूशन पे पहुंच सकते हो। स्टार्ट विद वीडियो एडिटोरियल, बट आफ्टर अ टाइम श्योरली मतलब रिटन एडिटोरियल वे बेटर देन वीडियो एडिटोरियल। Alright then, I guess we can move towards the end of the session. So thank you so much, Aman and Parul. It was really a very nice session, and I hope everybody has enjoyed as much as we have. And I या can see everybody writing in the chat box that it was a good session. So okay. बेस्ट। Also, to the audience, as we promised at the start of the session, we do have a giveaway from two of our sponsors, JetBrains and Coding Ninjas. JetBrains is providing its IDE subscription, and we have an exclusive T-shirt from Coding Ninjas. And we have decided the winner. However, we'll disclose it today on our Instagram handle. So stay tuned there. So yeah, it was a great session, and I hope you all enjoyed it, and it was really informative. Thank you, Aman Bhaiya and Paruldi, for joining us today and enlightening us with your knowledge. Also, MSc will be organizing many more such sessions to help you out. So do follow us on our Instagram, our social media handles to keep yourself updated. Don't forget to register for CodeVibe if you haven't already. So also, in case if you miss the session, you can watch it again on our YouTube channel, KIIT-BHU. Right. Thank you. Thank you. We'll be ending the session. थैंक्स एवरीवन। हाँ या थैंक्स।